राइट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक ड्यू टू सम unexpected work. I could not join last week video. So this week we'll be looking at June series update completely with last time Elliott Wave में आपने देखा ही था, इस बार प्राइस वॉल्यूम के साथ भी देखेंगे जून में क्या लग रहा है आफ्टर एक्सेलेंट मे मंथ। में जैसा कहा था वैसा मूव आया था। So let us move to June series update first. Instead of wasting much time, let us start with what charts are indicating. Good to have you back, Anand, after a long break. Thank you, Vijay. Last week वीडियो में जो मैंने कहा था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग पिक्चर ज़रूर है कि मार्केट अभी इमीडिएटली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो वो मैंने डिस्कस किया था। आई थिंक द गुड पार्ट इज लास्ट वीक से लेकर अभी तक 4 दिन तो पूरा ही फ्लैट प्राइस एक्शन रहा है ऑलमोस्ट, एंड देन दिस किक अप दैट हैपेंड, राइट। ये हो गए 1 2 3 4 5 दिन। तो वेव काउंट के हिसाब से अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये वीकली काउंट है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये जो एक्सपैंडिंग कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ऐसा ही पैटर्न पहले 2015 में और 2010 में भी हुआ था। तो इसमें अब हम जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि प्राइस जो है वो 40 वीक एज वेल एज 20 वीक डीएमए दोनों के नीचे है। 40 वीक इज ग्रीन लाइन एंड 20 वीक इज द रेड लाइन। एंड जैसे कि आई थिंक 2 वीडियोस पहले मैंने बताया था कि काफ़ी टाइम बाद, many months, the 20-week moving average actually crossed down below the 40-week moving average. इसको बेरिश क्रॉसओवर हम समझ सकते हैं। और उस टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हो गए, almost 2 months, right? So 2 months the price has remained below the 20-week moving average. और कंफ्यूजन अभी भी इसलिए है कि बॉटम लग गया या नहीं, क्योंकि इस लो को अभी तक हमने ब्रीच नहीं किया है, दिस लो। कमिंग टू द डेली वेव काउंट, पिक्चर कुछ इस तरह है। अगेन लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था हमने। देयर इज अ वे वेयर वी कैन थिंक कि हाँ, इस करेक्शन का ए बी सी यहाँ खत्म हो गया है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी। द अदर पॉसिबिलिटीज नहीं, अभी ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी है। बॉटम की पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जोन था 2.5 मंथ्स का, प्राइस ने अभी तक उसको ब्रीच नहीं किया है, व्हिच इज अ गुड साइन। बट इट आल्सो डजंट मीन कि वो ब्रीच नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राइस 20 डीएमए के ऊपर चला गया एंड देन विद अ ह्यूज गैप इट वेंट अप एंड इट डिडंट रियली फिल दिस गैप, नीचे नहीं आया पूरा। एंड प्राइस वेंट इनटू 40 डीएमए, उसके ऊपर भी थोड़ा चला गया था कल, but the closing has been below the 40 DMA. 16,718 is the 40 DMA, and closing has been 16,585, काफी नीचे बंद हुआ है। अगर हम आर्ली इंटरनल वेव काउंट पे जाते हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 वीडियोस देखा होगा, इसमें बात हो रही थी कि is this a triangle taking shape? कि ए बी सी डी ई तो नहीं था कि ट्रायंगल यहाँ खत्म हो गया। मुझे एक टाइम में लग रहा था कि यहाँ ट्रायंगल खत्म हो गया, बट देन दिस गैप अप चेंज्ड दैट। तो मुझे ये लग रहा है कि दिस इज जस्ट ए एंड दिस इज ए बी सी डी, व्हिच बी मोस्टली सबडिवाइड्स इनटू 3 waves, and then this whole thing looks like a C wave to me, right? 1 2, roughly this is 3rd 4th and 5th. इनफैक्ट कल मैं कीनली देख रहा था कि इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज करता है या नहीं करता है, बिकॉज दिस वाज वेरी क्लोज टू
बिकमिंग अ बुलिश साइन, क्योंकि इसके ऊपर ये ब्लू लाइन के ऊपर स्पेसिफिकली अगर क्लोज होता तो लगता कि शायद ये बॉटम या तो यहाँ लग गया या यहाँ लग गया, राइट? बट द वे द प्राइस हैज टर्न्ड एंड इट्स करेक्टिंग टुडे, मुझे लग रहा है कि दिस होल थिंग वाज जस्ट अ बेरिश बाउंस, एंड इसको भी हम एक एक्स वेव लेबल कर सकते हैं. Going back to the daily scale, because we finished an A, B, C, if this is an X wave, again we'll have an A, B, C down. और वो कहाँ तक जाएगा? There is no change in that. It can still come back and stop here. And अगर ये level breakdown हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये levels 14,500 के आसपास वहाँ तक जा सकता है. And I think the day the price moves below the 20-day moving average, वो तो 100% confirmation है कि ऊपर का खेल खत्म हुआ है. One thing worth noticing, let me show you another chart. Sorry. If you look at Nifty 500, ये तो larger market है ना. Nifty 50 में तो 50 stocks ही हैं. Nifty 50 में ये वाला लो ब्रीच नहीं हुआ था, बट Nifty 500 में हुआ था. थोड़ा सा ही हुआ है, बट टेक्निकली it did breach this low. So होता ये है often कि when the broader markets make a new low, कुछ दिनों बाद मेन इंडेक्स भी न्यू लो बना देता है. So let's see what really happens. Definitely it looks like a corrective wave to me till now. 100% confirmation, जैसे मैंने कहा कि जब तक ये 20 DMA को ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे 100% confirmation नहीं होगा, क्योंकि again going back to the hourly wave count, अगर सपोज ये ABC लेबलिंग गलत है, फॉर एग्जांपल सपोज मंडे को मार्केट ऊपर चलने लग जाता है, तो आई हैव टू रीएडजस्ट दिस, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अगर असली बॉटम लग गई है तो maybe there is a 1 2 and I can't see a fourth. हो सकता है कि हाफ एन आवर स्केल में कहीं दिख जाएगा फोर्थ, एंड ये फिफ्थ, ये एक इम्पल्स वेव था, ये ABC 2 लगा दिया एंड ये थर्ड के सब रिजल्ट्स है, वो एक पॉसिबिलिटी है. बट वी हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. मैं यहाँ से क्या मंडे को प्राइस अगर यहाँ खुलता है, वुड आई गो लॉन्ग? आई विल डेफिनेटली नॉट गो लॉन्ग, बिकॉज द रिस्क is very little for a short trade actually, because 40 DMA sustain नहीं कर पा रहा है प्राइस. अगर यहाँ कहीं खुलता है तो I could look at a short trade with a stop loss slightly above this. In fact, I will place my stop loss above this blue line, क्योंकि अगर इसके ऊपर चलेगा तो ये 200 DMA तक प्राइस जा सकता है. एंड जनरली मैंने देखा है कि जब भी ऐसे एक्स वेव्स हुए हैं, these X waves have stopped at about 50% of the earlier C wave. ये मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ रिट्रेसमेंट लगा के. ये देखो, roughly 50 to 61.8%. If I come here, ये थोड़ा लंबा लगता है इसका, but again this retracement till this point at least was about 50 odd%. बट अगेन यहाँ पे गैप अप होके ऊपर चलने लग गया. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वैसा ही कुछ यहाँ दिख रहा है मुझे. एंड इफ आई गो हियर अगेन, ये भी रफली 50%, सॉरी 61.8% ये स्टॉपिंग. सो 50 to 61.8% बाउंस यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था, बट यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर गया. अभी यहाँ पर भी हम वहीं पर है, उसी पॉइंट पर है. सो इट इज वेरी क्लोज टू गिविंग अस अ क्लियर सिग्नल.
वो मंडे को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है. But if it continues downwards, I have a feeling that this time it may actually break this 15,900, 800 zone, and it may actually go to this level. And अगर last 1 week का price action देखें तो रिलायंस को लेकर काफी इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है. Right? See how Reliance has been pulling up. So this one stock is, such a heavy weight. It is good enough to pull the index by a few points. तो अब ये रिलायंस जो है क्या इस हाई को क्लियर कर पाएगा, उस हिसाब से भी हम मार्केट को थोड़ा देख सकते हैं. Because somehow I have a feeling that this looks like an impulse to me. 1, 2, 3, 4, 5. And ये पूरा करेक्टिव वेव है. ABC A, ABC B, and this is another ABC. So in a way, यहाँ पे अगर इस पूरे 5 वेव मूव को मैं A भी लगाऊं तो ये B था, which means C down should follow. That is how it looks to me. So looking at the larger market making a new low below the previous low, the Nifty 500, and looking at the price structure of Nifty and looking at Mota Bhai's wave structure, I have a feeling that we are heading downwards. Over to you, Anand. Thank you, Vijay. Detail Elliott Wave possibilities. देखते हैं प्राइस में वॉल्यूम में क्या दिख रहा है. Let us move to price and volume. Chart is visible? Yes. Yeah. First thing, let us observe what market has done after our talk. In the May series and in the May monthly update and just before expiry update, one thing which we were clearly indicating that minimum this low will get tested. Should break. Possibility of it breaking is very high and it still remains. So market has done its move and we have been talking specifically of this once since 17,400 has broken and Nifty has beautifully completed its target. This was completely in the May series. अप्रैल से मई में आपको एक बहुत ही शानदार मूव मिला था. जिसने भी यूज किया हो, जिसने वीडियो वॉच किया, डेफिनेटली दे माइट हैव टुक एडवांटेज ऑफ इट. Now coming back to June series, what has market done is there was a consolidation or you can say pause within a narrow range of 16,350 to 15,750. इस अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट जोन में निफ्टी ने 8 to 10 सेशंस टाइम पास किया है आराम से. इफ यू लुक एट दिस वे, और आई वुड से एंड दिस वाज आफ्टर दिस लेग डाउन लेग बिफोर दिस अप मूव टेकिंग ऑफ. यानी कि such kind of base formation we keep on seeing whenever the trend changes. और ट्रेंड कंटिन्यू होता है एक पॉज लेके, जैसा यहाँ पे हुआ था. In this case, trend has continued. But whatever is the case, whether trend continued or reversed, one thing which has been 95% times working is ये जो भी रेंज है वो रेंज को सिमिलर टारगेट यहाँ अपसाइड बनाना चाहिए. So what does this give the target of 16,350 plus 600 points gives somewhere around 16,950, 17,000. This is a likely target for this move and which I am confident कि ये hit करना चाहिए coming sessions provided condition of negation level is ये फिर से इस रेंज में ना एंट्री मारे. यानी कि ये जो गैप है 16,350, 400 का, निफ्टी शुड नॉट क्लोज बिलो दिस 350, 400 zone. If at all this gives away 16,350, 400 zone, specifically if it goes on Monday itself, next week, Monday or Tuesday tak, in case, then this lows may get broken within June series. The probability of 15,750, 700
और इवन आई वुड से दिस मार्च लो तो 15600 चेंज 650 के पास जो भी लो है, this low may get broken within June series if next week by Tuesday this 16350 breaks away. अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक ब्रेक नहीं करके आगे चल के ब्रेक करे। जब भी ये ब्रेक करेगा, अगर मंडे ट्यूसडे ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसके बाद में उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा 16000 के पास, 15900 16000, द रियल बायर हु हैज ट्रिगर्ड दिस मूव एक्सपायरी डे वाले दिन वहां पे एक अच्छे शानदार वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ था, बट अल्टीमेटली वॉल्यूम्स हैव बीन कंटिन्यूअसली डल in this complete up move. Volumes are not too great to be very confident. One case can argue that यहाँ पे selling में volume आया, this volume got observed, so definitely this move volumes should not be there and it is very fine valid. So as long as we don't see very high volumes, say volumes above 1.5 crore, bulls can enjoy 1.3 crore, sorry. Any day you see volumes of 1.3 crore or plus, be very alert कि वहां से एनी टाइम मार्केट कैन स्टार्ट रिवर्स और टेक ए पॉज. Until then 16950 remains the likely target and ultimate target remains 17150 200, this high volume candle high. But remember one thing, this will just look like a pullback rally to me because इस जो कंसोलिडेशन जोन में निफ्टी ने टेस्ट करके पलटा है, वहां पे जो बेस बना के इस टाइम पे पलटा था मार्केट, इट शुड ना, यहाँ पे देखो एक दो दिन के अंदर रिवर्स मार लिया था. दिस वाज द टिपिकल वे इट शुड हैव डन. इट शुड नॉट हैव ट्रेडेड फॉर सो मेनी डेज विद इन दिस जोन. 1 2 3 this gone away again, came back 4 days. Market has been so beautifully absorbed within this, got accepted in this range, which means this range is likely to be broken. I would give 90% probability of this range getting broken, if not in June then July. एक महीना लेट हो सकता है, मगर the probability of 90% plus is this lows of March 15600 का जो भी lows है 600 change will get broken and this Nifty may test 15500 and ultimately even 14800 15000 zone. Probability of those testing remain very high, but immediate basis levels to be kept watch for the coming week and June series 16400 on a downside, 17150 on a upside. Watch out for these two levels and trade your plan your trade accordingly. Target remains upside 16950 17000 to get tested until 16400 is held on. 16400 gives away, turn to bearish camp, look for the target of 15600 and below. So good move you can capture once again. Volumes have been not too great to turn highly bearish, so bulls can enjoy for some more time. Because even if you look at today's volume, after even good sell-off दिख रहा था, मगर volume were completely missing. In fact, volumes were much lower than last 3-4 days volume, 4-5 days volumes. अगर observe करो, very dull volumes, which means supply after even Nifty getting at such an interesting level, supply is missing, indicating smart money might be looking at some higher level to sell, or we may see follow through on Monday and down may begin where we may see higher volumes. So all in all, 16400 until held, upside 17150 likely target remains open, and 16400 350 zone breaks, look for the target of 15600 and below. That's it for the June series. उस ये दो लेवल्स के हिसाब से काम कीजिएगा. मेन इंपॉर्टेंट लेवल इफ यू वांट 16400 को बेस बना के जहां भी जाता है क्लोजिंग बेसिस उस समय यू कैन टेक अ ट्रेड. 16350 400 जोन, उस जोन को नो ट्रेड जोन पकड़ लो एंड कीप ट्रेडिंग. Clear, Vijay? Very clear. Yeah. So that's it from us today. Hopefully we'll be back soon. Which most likely next week I'll try to update one video before I move out for a long trip again. Sorry for the inconvenience. I'll try to find a time next week again. Friday को ही करते हैं mostly so that we can catch up. Yeah. Till then, keep following and
I'll definitely update on Twitter, in Telegram channel whenever some major reversal is seen. Apart from these levels, अगर levels change हो रहे हैं, I'll update. So keep following. और विजय डेफिनेटली अपडेट रहेगा, उसका वेव कॉल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, डू सो. वहाँ Yeah, पे please do रेगुलर that. वेव काउंट अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे वेव काउंट अल्टरनेट वेव काउंट ट्रिगर हो रहा है. सो नॉट टू मिस आउट ऑन दोस थिंग्स. कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग. The link to the Telegram Keep, channel is in the description under the video. yeah, keep sharing your feedback. See you guys on the next video. See you once again next week. Bye bye. Thank you.